Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your school life too. So children, let's begin with our next chapter, which is Unit 6, our universe, our planet Earth. Stepping up the Earth, shape of Earth, movement of the Earth, satellite of Earth. So children, basically we are going to discuss about our home planet Earth. About Earth, the shape of Earth, how the Earth move and about the satellite of Earth. हम अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो घर है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसकी शेप के बारे में जानने वाले हैं, अर्थ कैसे मूव करती है और क्या क्या उसकी सैटेलाइट्स है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे. बट पहले हम करेंगे एक एक्टिविटी इंगेज. Look at the pictures and write in the blanks where it is day and where it is night. So you can clearly see in both of the picture where you can see the day and where you can see the night. In the first picture you can see it's clearly a sunny day, and in the second picture it's a night. So in the first picture you will write a day and in second picture you will write night. दोनों पिक्चर देख के आपको पता चली गया होगा क्योंकि दोनों पिक्चर आप क्लियरली समझ पा रहे हैं. पहली पिक्चर जो है इसमें आपको सनी डे नज़र आ रहा है, दिन का टाइम है, तो हम यहाँ पे डे लिखेंगे. नेक्स्ट में आपको एक अंधेरी अंधेरी रात नज़र आ रही है जहाँ पे आपको मून नज़र आ रहा है स्काई में, तो हम यहाँ पे नाइट लिखेंगे और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे. द सन, द मून एंड द स्टार्स आर विजिबल टू अस फ्रॉम द अर्थ. So children, we can clearly see the sun in the daytime and the moon and the stars in the night time from the earth. हम अर्थ में अपनी घर पे बैठे बैठे ही हम क्या देख पाते हैं? सन देख पाते हैं, मून देख पाते हैं और स्टार्स देख पाते हैं. कहाँ पे? स्काई में. दिन के टाइम हमें सन नज़र आता है और रात के टाइम हमें मून और बहुत सारे छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं. The earth, we live on the earth. The earth is made up of land and water. It is covered with a blanket of air called atmosphere. A large part of earth's surface is covered with water. That is why the earth is called a blue planet. So remember it. Why are planets called blue planet? Because when you see from the space, our earth is look like a blue planet. That's why it is called blue planet, and its large part is covered with water and it has a layer which is called blanket of air and atmosphere. Various water bodies such as river, ponds, seas, lakes and oceans are found on the earth. Earth has different types of landsforms. They are plain, deserts, mountain or hills and plateaus. So earth's surface is not even from all the places. Some places are of covered with desert, some are of plains, some are covered with hills and mountains and some are covered with plateaus. हमारी जो अर्थ है इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप स्पेस से देखो तो ये इस तरीके से नज़र आती है जैसे यहाँ पिक्चर में नज़र आ रही है, और आप ध्यान से देखोगे तो उसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. यहाँ पे जो सरफेस है अर्थ का वो लेवल पे नहीं है, एक लेवल पे नहीं है, मतलब पूरा प्लेन नहीं है. कहीं पे थोड़ा सा उठाव है, ठीक है, कहीं पे आपको हिल्स नज़र आ जाएंगे, कहीं पे आपको डेजर्ट नज़र आ जाएंगे, कहीं पे आपको प्लेन्स नज़र आएंगे, कहीं पे आपको प्लेट्यूज नज़र आएंगे. नाउ प्लेन्स आर द एरियाज वेयर लैंड इज फ्लैट. वी लिव मोस्टली इन प्लेन एरियाज. Second is desert. Some parts of the earth are covered with sand. These sandy lands are called deserts. These areas receive little or no rainfall. Camel is the animal used for transportation in desert, so it is also called ship of the desert. So in the desert you see no tree is there because these areas receive no or little rainfall, and the camel is used for transportation. डेजर्ट एरिया में आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर क्या होते हैं? सैंड्स होती हैं, रेतीला मैदान होता है. यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम होता है. थर्ड इज़ माउंटेन एंड हिल्स. एरियाज दैट आर स्लाइटली हायर देन द सराउंडिंग प्लेन एरियाज आर कॉल्ड hills. Hills that are very high are called mountains. In some areas you see a kind of height, and if you see a more height than normal height, these are called the mountains. कुछ कुछ एरिया में जैसे आप हिमाचल चले जाओ, आप उत्तराखंड चले जाओ, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? पहाड़ मिलेंगे. तो ये सारे क्या होते हैं? माउंटेन एरिया होता है, हिल एरिया होता है. फोर्थ, प्लेट्यूज. प्लेट्यूज आर स्लाइटली आर हायर
area with flat top. So plateaus are basically high areas but they are not conical, they are with flat top. प्लेट्यूज भी जो होते हैं ये थोड़ा सा हाइट में उठे हुए होते हैं, लेकिन इनके माउंटेन की तरह एक ऐसा कोन नहीं बना हुआ होता, इनके जो हाइट होती है वो फ्लैट होता है. फिफ्थ इज आइलैंड. द लैंड मास दैट इज सराउंडेड बाय सी फ्रॉम ऑल द साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड. तो बेसिकली आइलैंड इज दैट लैंड मास और लैंड एरिया विच इज ऑल सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल साइड. आइलैंड आपने देखा ही होगा, ये एक एरिया होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है. नाउ टेक ब्रेक, फोकस अटेंशन बेस, पुट अ टिक फॉर करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग ones. So some statements are given here. What you have to do, you have to just read them and you have to mark tick if the sentence or the statement is correct, and you have to mark it cross if the statement is wrong. So just read the statement. Plains are areas where land is flat. Yes, it is true. So you will tick it. Deserts receive huge rainfall every year. No, desert receive a very less or no rainfall every day or every year. So you will write cross here. Plateaus are high area with flat top. Yes, it is true. So you will tick this sentence because it is correct. Island is not surrounded by water. No, it is surrounded by water. So you will cross it. Let's move forward. Shape of the earth. Now we will know about how our earth look like, how our earth is of which shape. The shape of the earth is round and is resemble a huge ball. The earth is slightly flat near the poles, i.e. top and bottom part, and slightly bulged from the center. This shape is called sphere. So our earth is of round shape, but it is not of proper circle round shape. It is flat from both sides, from the top and from the bottom, and it is bulged from the center. The shape is called sphere. हमारी जो अर्थ है ये राउंड तो है, लेकिन ये प्रॉपर जो गोल होता है ना वैसी नहीं है. ये टॉप से और बॉटम से फ्लैट है और थोड़ा सा साइड से कैसी है, बल्ज है, फैली हुई है. Movement of the earth spins on its own axis and also around the sun. The spinning movement of the earth is called rotation. The earth completes one rotation in 24 hours or a day. It rotates on its axis. Axis is the imaginary tilted line passing through the poles and center of earth. So our earth moves. Do you know? Our earth spin on its axis. It spin on axis and it move or it revolves around the sun. So when it completes on one rotation, it completes 24 hours a day, or you can say one day. It takes one day to complete one rotation. The rotation of the earth causes day and night. The part of earth which faces the sun has day while the other part of the earth has night. The earth's movement around the sun is called revolution. Earth takes one complete year or 365 days to complete one revolution around the sun. The imaginary path on which earth moves around the sun is called the orbit. The revolution of earth causes change in season. So earth revolve or rotate on its axis and it also revolve around the sun, and when it completes its revolution, it's complete its revolution in 365 days, or you can say 1 year. हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, अपना उसका एक एक्सिस है, उस पर भी वो घूमती है, जिससे डे और नाइट होते हैं, क्योंकि ये पूरा एक 24 घंटा लगाती है अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में. लेकिन उसके साथ साथ ये सन के आसपास भी क्या करती है, रिवॉल्व करती है, और वो चक्कर को पूरा करने में एक साल का समय लग जाता है, 365 डेज का समय लग जाता है, जिससे सीजन्स वगैरह में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. नाउ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. अ सैटेलाइट इज एन हेवनली object that revolves around a planet. Moon is the only natural satellite of the earth. Scientists have also sent many artificial satellites in space. These artificial satellites send important information about weather, countries, security, etc. So there are man-made satellites and there are natural satellites in the space. Our earth's natural satellite is moon. It rotates around our earth.
and there are so many satellites which are sent by scientists to take information about space, about weather, countries, securities, etc. तो स्पेस की अगर हम बात करें तो दो तरह की सैटेलाइट्स वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। एक हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून के नाम से जानी जाती है, और मून भी जो है हमारी अर्थ के आसपास क्या करता है, चक्कर लगाता है। कुछ सैटेलाइट्स जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा भी भेजी गई है स्पेस में, ताकि वहाँ की इंफॉर्मेशन वगैरह ली जाए, वेदर के बारे में फोरकास्ट किया जा सके, दूसरी कंट्रीज़ के बारे में पता लगाया जा सके। नाउ डू यू नो Jupiter takes 60,000 days to complete its one revolution around the sun because it is very far from the sun. So due to the distance of the Jupiter from the sun, it is very far from the sun, that's why it takes 60,000 days to complete one revolution. ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है बच्चों। जो जुपिटर है वो उसके डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि जुपिटर जो है वो सन से काफ़ी दूर है, तो वो जब उसका एक चक्कर कंप्लीट करता है तो उस चक्कर को कंप्लीट करने में उसको 60,000 डेज का टाइम लगता है। नाउ चैप्टर कवर अप द अर्थ हैज़ एयर, लैंड एंड वाटर प्रेजेंट ऑन इट। देयर आर डिफरेंट वाटर बॉडीज लाइक river, ponds, seas, lakes and oceans. Different landforms on the earth are plains, deserts, mountains and plateaus. The shape of the earth is sphere. The earth rotates around its own axis and revolves around the sun. So children, in this chapter we have learned about our earth, our planet earth. Earth has air, land, water present on it, which is useful for our life. And there are different water bodies like river, water, pond and other things. Also we have learned about different landforms of the earth. We have learned about the shape of the earth, that our earth is not round but it is a shape of a sphere. Also about the moon and the satellites which are sent to space by the scientists. हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, ठीक है, अर्थ की शेप के बारे में जाना, अर्थ में अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स हैं, अब हमको पता चल गया है कि अर्थ में अलग अलग लैंड फॉर्म्स है। अर्थ हर जगह से प्लेन नहीं है, कहीं पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कहीं पे हमें डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, कहीं पे हमें प्लेन और प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अर्थ कैसे रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, ये भी हमने जाना, और अर्थ की सैटेलाइट के बारे में भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा। नाउ थिंक एंड आंसर बेस्ड ऑन NEP 2020. Pick the correct answer. Which of the following landform is surrounded by water from all the sides? Is it river, is it island or is it hill? So the correct answer is, can you guess it? Yes, it is island. Island is a landform which is surrounded by water from all sides. Second, the earth is also known as dash, a red planet, a green planet or a blue planet. So it is called blue planet because it is mostly covered with water. Third, the earth completes one rotation in dash. Is it 24 hours? Is it 365 days or is it 1 month? So the correct answer is 24 hours. Earth takes 24 hours to complete one rotation. Fourth, the revolution of the earth causes change in dash. A, weather, B, seasons or C, climate. So the correct answer is seasons. Fifth, which of the following is the imaginary path on which the earth moves around the sun? Is it axis, is it equator or is it orbit? So the correct answer is orbit. Now B, fill in the blanks. We live on the planet dash. We live on the planet earth. Earth पे हम रहते हैं. Second, dash are areas where land is flat. So it is plain. Plain are areas where the land is totally flat. Third, the shape of the earth is sphere. Now fourth, the dash of the earth causes day and night. So the rotation of the earth causes day and night. Now fifth, dash is the only natural satellite of the earth. Tell me children, which is the natural satellite of earth? Yes, it is moon. Moon is our natural satellite. Now see, state whether the following statements are true or false. The moon is the only satellite, natural satellite of the earth. Yes, it is true. Second, rotation of the earth causes change in season. Is it true or false? No, it is false. Revolution of earth causes change in season.
Third, the earth takes 28 days to complete its revolution around the sun. It is also wrong. Earth takes 365 days, or you can say 1 year, to complete its revolution around the sun. The earth rotates around the moon. No. Even the moon rotates around the earth. So it is wrong. It is false. Fifth, Jupiter takes 60,000 days to complete its one revolution around the sun. Yes, it is true, because it is far from the sun. That's why it takes 60,000 days to complete one revolution. Now answer the following questions. Define the term the earth. We live on the earth. The earth is made up of land and water. It is covered with a blanket of air, which is called atmosphere. A large part of Earth's surface is covered with water. That's why it is called blue planet. Now second, what is the difference between rotation and revolution? So the spinning movement of the earth is called rotation, and the earth's movement around the sun is called revolution. Third, what is the shape of the earth? Explain. The shape of the earth is round and it resembles a huge ball. The earth is slightly flat near the poles and it is slightly bulged from the center. This shape is called a sphere. So the fourth question is, what are the different types of landforms? Explain any two. Earth has different types of landforms. They are plain, desert, mountain, or hill and plateaus. Plains are the areas where land is flat. We live mostly in plain areas. Desert, some parts of the earth are covered with sand. These sandy lands are called desert. These areas receive little or no rainfall. Camel is the animal used for transportation in desert, so it is called the sheep of the desert. Now fifth, name the natural satellite of the earth. So moon is the only natural satellite of our planet earth. हमारी earth का natural planet moon ही है. Now next, out of the box critical thinking. What would happen if the earth stop rotating around the sun? So you have to think and answer what would happen, or what will be the consequences if our planet earth would stop rotating around the sun. So you will discuss with your friend and you will answer the question. यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हमारी जो अर्थ है वो सन के आसपास रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा, तो ये आपको सोचना है और पता लगाना है. Now cross links physical media development. If an year has 365 days and each day of the year has 20 hours, how many hours would be there in the whole year? So what you have to do, you have to just think and answer. If there are 365 days in a year and each day of the year has 20 hours, so you have to count how many hours would be there in the whole year. यहाँ पे पूछा गया बच्चों क्वेश्चन कि एक ईयर में हमें पता है 365 डेज होते हैं, लेकिन क्या हो कि आपका हर एक दिन जो है वो 24 घंटे का ना होकर के 20 घंटे का होगा. तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितने आवर्स होंगे वहाँ पे होल ईयर में. तो ये भी आप पता लगाएंगे, थिंक एंड आंसर करेंगे या अपने फ्रेंड के साथ इसे डिस्कस करेंगे. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द गिवन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरोली.